कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटेंस तो सीरीज है 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 फॉर n इक्वल है सी इक्वल टू सी बाय n और पैरेलल है सी इक्वल टू सी 1 बाय सी 2 सी इक्वल टू एन सी तो बेसिकली उल्टा ऑफ द रेजिस्टेंस सो कैपेसिटेंस पैटर्न वाला क्वेश्चन है तो k1 k2 k3 है c1 c2 c3 अलग अलग c1 c2 KVL इन कैपेसिटेंस है VA minus 10 into 2 minus 60 by 5 minus 20 सब पोटेंशियल कन्वर्ट करके लिखा है ये इफेक्ट ऑफ मीडियम QP equals Q naught of 1 minus 1 by K induced charge on the surface of dielectric प्लेट वैल्यूज प्लेट वाले क्वेश्चन सो सी ए भी ए टू ए कुने तब पुनी सी तब पुनी बी पुनी ए पुनी बी तो याको कनेक्ट कर जो सी रे दीटा आसला एंड पॉइंट देन सेटा हला बर्बाद सेटा चूज हे परिबन तार तो ए बी दीटा अलग एंड पॉइंट दरकार तो सी इक्विवेलेंट ताको कैलकुलेट करके लिखा अछि सजे कैपेसिटेंस ले आइसोलेटेड स्पेस सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर तापर टू कंडक्टर्स पुनी स्फेरिकल हेले सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2 by r2 minus r1 सिलिंड्रिकल हेले c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन l upon ln r2 by r1 and c equals to k एप्सिलॉन by d charge energy stored or work done q equals to cv work done is equals to q into v or cv square u equals to half cv square or q square by 2c now it heat dissipate hela 1 by 2 cv square now force between the parallel plate capacitor hela electric field net hela sigma by epsilon naught and when the sigma hela q by a so hela q by a epsilon naught और force is equals to q square by k a epsilon naught और जब किसी दिन तक हमें k को 2 भी नहीं मिलेगा सो फोर्स इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट टेक्निक फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पॉइंट जंक्शन प्लस पॉइंट जंक्शन रूल सम ऑफ ऑल द charge from a junction is equal to 0 so at point x la c1 whole to x minus v plus c5 x minus v is equal to 0 y will be same equation wala then solve x and y to find y then find the charge q1 q2 then q equal to cv वगैरह बाहर कर दो charge sharing and heat generator combination of same polarity है potential V equals to C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 और heat loss ला half C1 C2 by C1 plus C2 VR minus V2 whole square maximum time मेरा ही यूज है ऊपर का और opposite polarity है ऊपर खाली नेगेटिव बाकी तले सेम रहेगा सब और U है U भी पॉजिटिव है जो नेगेटिव लागू तो कनेक्टेड ऑपोजिट पोलैरिटी है खाली साइन चेंज है जो नेगेटिव टा खाली पॉजिटिव है बाकी सब सेम रहेगा डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 minus 1 by k slab in the capacitor है q inside is equal to q into 1 by 1 minus 1 by k effects of inserting of dielectric in a capacitors first la at constant voltage charging battery connected है k will be multiplied with c some increase as some of the k multiply so increase खाली voltage plus electric field constant रहेगा at constant voltage charging battery connected रहेगा at constant charge when battery will be removed then खाली capacitance को छाड़ी की सबसे decrease होगा by divide by k होगा तो decrease होगा capacitance को छाड़ी खाली करने से increase होगा तो k multiply होगा सिर्फ बाकी सब तो divide होगा multiple dielectric medium इधर है c equals to a epsilon naught d minus t plus t by k C1 by C2 C1 is equal to K epsilon naught by D okay hollow sphere solid sphere both will have the same charge on them Q at steady state don't take the resistance of the capacitor wala wire connected plate B and D connected so place at same position it connected by wire दोनों का potential difference same होगा mechanical energy of capacitance E equals to U initial minus U final charging K multiply discharging K divided from U charging charge conservation Q initial is equal to Q final C1 V1 is equal to C1 V0 plus C2 V0 common potential and connected to a new capacitor Q on C2 plus C2 into V0 uncharged capacitance will try to have equilibrium voltage at T equals 0 when switch is closed I equals to V by R equals Q by CR here the potential difference will be equal among the both the branches of A to B. So we have C1 equals Q1 equals to C1B and the low wala branch in upper branch V1 plus V2 V3 is equals to V Q is equals to CV. So Q by C2 plus Q by C3 equals to V. Now charge Q on both the capacitor will be same as
both are on same wire. Here charge on all the three capacitors will be same irrespective of their individual capacitance. If on three capacitors, Q equals to C equivalent into V. Here C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. Divided by B 3V plus 5D. अच्छा कैपेसिटेंस से फील्ड पार्टनर K इक्वल्स टू 5 और अनफील्ड पार्ट है एयर सो K मैंने 1 रहेगा और C2 C1 नहीं कि इधर को सॉल्व करे पड़ियो C2 है A1 एक्सप्लेंड बाय D C1 इक्वल K A2 एक्सप्लेंड बाय D और जब पार्ट लेंस से तो सीधा ऐड होगा C1 plus C2 U इक्वल टू हाफ C इक्वल टू V स्क्वायर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है देन assume the capacitor to be disconnected from both from bottom U dash is equals to U by K. On बाहर वाला side Q1 plus Q2 by 2 and we need net charge la so as Q1 so under it will be Q1 minus Q1 plus Q2 by 2 equals to Q1 Q2 by 2. Section la now both distorted battery and joined in parallel so first charge then disconnected then they connected medium like K C V naught plus C V naught is equals to K C V plus K C V. Charge stored on C4 सावधान करेंगे सॉल्व कर ले एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेडी स्टेट इन कैपेसिटर है कहते हैं कि इसको पहले हटाओ साला देन 80 अच्छा वोल्टेज डिफरेंस 80 क्यू को सीवी रिलेशन काट दो देन अच्छा हाँ यू को हाफ सीवी कर Q2 is equals to C2 by C1 plus C2 into Q naught. Charge at point 2 है some point capacitor same point capacitance by sum of both capacitor into total charge. Parallel plate capacitors taking in equal space connected. So C equivalent is equals to n minus 1 whole into C. Electron at rest released inside at what speed it will hit plate 2. Work done is equals to Q into V1 as V1 is equals to kinetic energy is equals to half mv square. And V2 is greater than V1. Flow of charge in a circuit with two capacitors. Use the formula to find potential of each capacitor. Then charge will flow in the capacitor with low potential. So it is not possible to make a sphere of capacitance 1 Faraday as we need a sphere with radius of 9 meter long extremely. So C equals 4 R. Path of charge particles between two capacitors is a parallel trajectory. Circular plate capacitor electric field is equal to sigma by K naught. The rate of change of potential difference dV by dt is equal to I by C. The magnitude of electric field at distance affects the point having charge equal to the capacitor 1 plus capacitor electric field is equal to kq by. Use the circuit analysis method to get the value of charge on capacitor C1 plus C2 then EP is equal to k q1 plus k C2 by R square. The time period of pendulum inside the capacitor T equals 2 pi under root L by G effective 2 pi under root L by G under root of G square plus QE by M whole square.